हेलो एवरीवन, वेलकम टू छाया क्लासेस। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एंड दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया 1773 to 1947. And today we will discuss total 13 act on mind map in this video. Let's start. The Regulating Act 1773 on Mind Map. फ्रेंड्स, सभी एक्ट पे आप डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं जिसका लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है. ओके, नाउ स्टार्ट. रेगुलेटिंग एक्ट 1773. फर्स्ट पॉइंट, it introduced parliamentary system in India. Next point, Bombay and Madras presidencies subordinate to the Bengal. And next point, appointment new post governor general along with 4. इससे पहले केवल गवर्नर पोस्ट थी. एंड न्यू पोस्ट रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू क्या हुई? गवर्नर जनरल. फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता. रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू एस्टैब्लिश किया गया क्या? सुप्रीम कोर्ट. और कहाँ? कलकत्ता में. Next point, company directors were elected for 4 years and 1/4 of them returning every year. Next point, only those proprietors have voting rights who held stock worth £1,000. Next point, foundation of central administration and written constitution was introduced. Okay. Regulating Act 1773 के थ्रू written constitution was introduced. Next act है the Settlement Act 1781. First point, separation of power. And next point, change in the powers of the Supreme Court. And next point, courts geographic jurisdiction become limited to only Calcutta. Okay. Next point, appellate jurisdiction shifted in the hands of the Governor General and Council. Next point, the Supreme Court was separated from revenue cases. And next, the assertion on the application of the personal laws. नेक्स्ट एक्ट है द पिट्स इंडिया एक्ट 1784. फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट टाइम द टर्म ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया वॉज यूज्ड. नेक्स्ट पॉइंट, सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट ऑन द कंपनी. फर्स्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड सेकेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. नेक्स्ट पॉइंट, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल took care of civil and military affairs of revenues, and commercial activities were still a monopoly of the company. Next point, the Governor General's Council strength was reduced to their members. And next, the Governor General Council was now under indirect control of the British government. नेक्स्ट एक्ट देखते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1813. दिस एक्ट asserted the crown's sovereignty over British India. Next, extended another 20 years to trade right and responsibility of East India Company. Next point, empowered the local governments. Next, companies should invest 1 lakh rupees every year on the education of Indians. Charter Act 1813 के थ्रू फर्स्ट टाइम 1 lakh rupees every year इन्वेस्ट किया गया किस पे? एजुकेशन पे ऑफ इंडियंस के लिए. नेक्स्ट पॉइंट, परमिशन टू क्रिश्चियन मिशनरीज टू केम टू इंडिया. ये ध्यान रखिएगा, 1813 के थ्रू परमिशन मिला किसे? क्रिश्चियन मिशनरीज को इंडिया आने का. नेक्स्ट पॉइंट,
India's revenue still remained under the company's control. Next act, the Charter Act of 1833. End of East India Company as a commercial body. Separated the legislative function of the Governor General in Council from the executive functions. Next point, codification of laws under Macaulay. First Law Commission चार्टर एक्ट 1833 के थ्रू ही इस्टेब्लिश हुआ था फर्स्ट लॉ कमीशन, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रोविजन फॉर इंडियंस इन गवर्नमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट, फर्स्ट स्टेप इन द सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडियंस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिटिगेशन ऑफ स्लेवरी इन इंडिया। नेक्स्ट एक्ट 1853 on mind map. This act served as the foundation of the modern parliamentary. And next, first time the legislative and executive function of the Governor General's Council were separated. Next point, it gave birth the Indian civil services. And next point, first time local representation was introduced into the Legislative Council. Next point, expansion of Governor General's office now was expanded to 12 members. And next point, the Court of Directors could appoint Lieutenant Governor for the provinces. Next act, Government of India Act 1858. This act abolished the company rule and the beginning of British rule in India. Next, this act abolished the dual government. Next point, the principle of doctrine of lapse was withdrawn and new post created Secretary of State for India. Next point, the Governor General of India was henceforth designated as a Viceroy. Next point, the administration of the country was now highly centralized. Next act, Indian Council Act 1861. First point, expansion of legislative system. And next, portfolio system, cabinet system. Next point, nominated non-officials members would be Indians. Next point, empowered the Governor General Viceroy to issue ordinance. Next point, it initiated the process of decentralization. And next point, establishment of 4 new legislative councils. Next, Indian Councils Act 1892. Expansion of the Supreme Legislative Council. Next point, expansion of the Provincial Legislative Council. Next point, introduce indirect election in Legislative Council. Next point, the right of discussion and interpretation of the budget. Next point है expansion the legislature power of provinces. And next point, beginning of parliamentary system. And now, Indian Council Act 1909, Morley-Minto reforms. On mind map, first point, enlargement of legislative council and separate electorate and communal representation. And next, introduction of the indirect election. Next point, first time appointment of Indians. And next, qualification of voters and candidates.
एंड इंडियन काउंसिल एक्ट के थ्रू नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशन द फंक्शंस ऑफ काउंसिल्स एंड नेक्स्ट members ask supplementary questions and discussion of the annual budget. तो ये ध्यान रखिएगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जिसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे सेपरेट एलोक्ट्रेट एंड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है ठीक है ऐसे सारे पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट हैं नेक्स्ट एक्ट देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 फर्स्ट पॉइंट लिमिटेड फ्रेंचाइजीज एंड नेक्स्ट सेपरेट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट नेक्स्ट पॉइंट डायरकी इन प्रोविंसेस रिजर्व सब्जेक्ट एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट नेक्स्ट पॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन and new office of high commissions. Next point, expand communal representation for Sikh, Anglo-Indian, Indian, Christians, European. And next, 3 out of 6 in Viceroy Executive Council were to be Indian. Bicameralism system and direct elections. Next act Government of India Act of 1935 Federal system of government Diarchy in the center गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आपने देखा था डायरकी इन द प्रोविंसेस थी अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डायरकी इन द सेंटर नेक्स्ट पॉइंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू क्या इस्टेब्लिश किया गया फेडरल कोर्ट नेक्स्ट पॉइंट डिवाइड द पावर बिटवीन द सेंटर एंड यूनिट्स ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नेक्स्ट पॉइंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक एंड प्रोविंशियल जुडिशरी एंड 6 हाई कोर्ट पब्लिक सर्विस कमीशन इंट्रोड्यूस किया गया द फेडरल रेलवे अथॉरिटी भी इंट्रोड्यूस की गई नेक्स्ट पॉइंट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 एबॉलिश ब्रिटिश रूल पार्टीशन ऑफ इंडिया इंडिया एंड पाकिस्तान लिबर्टी ऑफ प्रिंसली स्टेट्स और नेक्स्ट पॉइंट एबॉलिस्ट ऑफ वाइसरॉय पोस्ट रीजनरेटेड पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल एबॉलिस्ट ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी नेक्स्ट पॉइंट ड्रॉप द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया एंड नेक्स्ट पॉइंट गवर्नमेंट responsibility on the Constituent Assembly. And I hope you have understood the all act well. Also, if you have any query and suggestions, write in comment box. Please like and subscribe to my channel for new videos. Thank you so much.